Today we are talk about the communication most important 15 question for UGC NET जून 2024 and पेपर 1 के लिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 dash is a kind of written announcement that is distributed to a large number of the people to convey any commercial or non-commercial message at the minimum time, cost and effect. Option number 1 memo, option number 2 notice, option number 3 circular, option number 4 publicity. Option number 3 circular was the right answer. ठीक है, यहाँ पर आप लोग डिटेल्स में देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, an artificial and highly commercialized culture popularized through mass media is number 1 universal, number 2 urban culture, number 3 mass culture and none of the above. Option number 3 mass culture was the right answer. ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, डिटेल्स देख सकते हैं, एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 हु इज एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ OSI मॉडल। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 चार्ल्स बचमन, नंबर 2 ISO, number 3 MIT and USA, number 4 UCLA California and option number 3 was the right answer, 1 and 2 was correct. Charles Bachman and ISO was the right answer. ठीक है, यहाँ पर आप लोग डिटेल्स में देख सकते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, यहाँ पर देख सकते हैं फिजिकल लेयर क्या है, यहाँ पर डिटेल्स में आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, आप लोग वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्रिस्टलाइजिंग पब्लिक ओपिनियन मैच द फॉलोइंग यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, क्रिस्टलाइजिंग द पब्लिक ओपिनियन वाज एडवर्ड एल बर्नियस, ए का 2 होगा। ठीक है, बी का 4 द पावर ऑफ कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन वाज पाउल ए अर्जेंटी एंड C3 इफेक्टिव पब्लिक रिलेशन वाज स्कॉट एम कटलिप, सी का 3 है एंड डी का पब्लिक रिलेशन स्ट्रेटेजी डी का 1 है सैंडर ओलिवर। ठीक है, डी का 1, so option number 3 was the right answer, A2 B4 C3 and D1। ठीक है, next question, too much noise in the classroom and no cognitional atmosphere in class in which type of barrier? Option number 2 physical barrier was the right answer। ठीक है, next question, question number 6 identify the sequence of cultural barrier in communication is as listed by experts CEDBA। फर्स्ट में आएगा सिमेंटिक्स, उसके बाद आएगा वर्ड कॉनोटेशंस, उसके बाद आएगा टोन डिफरेंस, उसके बाद आएगा डिफरेंस इन टॉलरेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स एंड लास्ट में आएगा मेथड एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 1 वाज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन इन क्लासरूम? ऑप्शन नंबर 4 प्रिंसिपल ऑफ कोर्टेसी वाज द राइट आंसर। ठीक है, अगर आप लोग डिटेल्स में देख सकते हैं। ठीक है, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द कम्युनिकेशन आर द प्रिंसिपल ऑफ क्लियरिटी, प्रिंसिपल ऑफ करेक्टनेस एंड प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीटनेस, प्रिंसिपल ऑफ concreteness and principle of concise or specific or not complex, and number 6 principle of courteous and number 7 considered and coherent। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
8 assertion एंड रीजन पे दिया हुआ है, ठीक है। ए टीचर डिस्कस क्लास 6 student norms and rule for the having the meaningful classroom discussion, ठीक है। ये this statement was true, but the reason क्या कह रहा है, teacher should always be a control in the class and detect the classroom without consulting the student, तो ये incorrect होगा, ठीक है। So option number 3 was the right answer. A is true, assertion is true, but reason is false. Next question. Question number 9. Which of the following is the language barrier? Giving the unclear sign, wrong pronunciation, and differences in the language spoken. All of the above was the right answer. Option number 4. ठीक है, यहाँ पर आप लोग डिटेल्स में देख सकते हैं, ठीक है। The common language barrier in the classroom communications, यहाँ पर आप लोग डिटेल्स में देख सकते हैं, ठीक है। Next question. Question number 10. Which of the following is not a unit of macro level of socialization? Religion was the correct answer. Religion was not a unit of the macro level of socialization. Global community, mass media, and social network was the macro level of socialization, but religion was not. So option number 3 was the right answer. ये पर आप लोग डिटेल्स में देख सकते हैं, ठीक है। Next question. Question number 11. Statement 1. Mass media changes the value and the belief of people. It is correct, but without socializing there is no growth in a no growth in a child. It is not correct, ठीक है। Next question. Question number 12. Assertion क्या बोल रहा है, being judgmental on the part of the teacher is a barrier to the communication. And reason क्या बोल रहा है, for the effective learning outcome the teacher should expose the ignorance of student. So reason was incorrect, but assertion was true. So option number 3 was the right answer. A is true, but R is false. Next question. In which year the radio broadcasting had starting in India? 1923. Option number 2 was the right answer, ठीक है। ये वो डिटेल्स में देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। प्लीज वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following are important in the intellectual communication? Valuelessness, option B. Absence of respect, option C. Power and distance, option D. Individualism, and option E. Gender roles. So absence of respect, it was not correct, option number B. So C, D and E was the right answer, ठीक है। and valuelessness is also incorrect. So power distance, individualism and gender role was the right answer. C, D and E, option number 3, ठीक है, was the right answer. यहाँ पर आप लोग डिटेल्स में देख सकते हैं, ठीक है। Various element of the intellectual communication includes epistemological diversity, language and culture, cognition, power distance, identity and ideology, intellectual language education, intellectual communication and competencies and awareness, intellectual rapport, individualism, intellectual global citizenship, digital communication, migration and multilingualism and super diversity, workshops communication and gender role. Next question. Lecture method is a example of one way communication, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर लेक्चर मेथड में स्टूडेंट को इतना ज़्यादा मौका नहीं दिया जाता, ठीक है। स्टूडेंट के फ्लेक्सिबल नहीं है यहाँ पर, ठीक है। स्टूडेंट का जो फ्रीडम है वो थोड़ा सा कम है, ठीक है। यहाँ पर लेक्चर मेथड पे टीचर एक्टिव रोल प्ले करता है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग डिटेल्स में देख सकते हैं।
सो डन, 15 क्वेश्चन आर डन। प्लीज इस तरह की वीडियो एंड क्वेश्चन आंसर पाने के लिए प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।